हाँ भाई, क्या हाल चाल है सब लोगों के। वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। हम लोग ऑफलाइन जब थे और ऑनलाइन जब आने की बात कर रहे थे। अरे मैं म्यूट हो रखा हूँ क्या? नहीं, अभी नहीं अनम्यूट हो गया। नहीं नहीं, तू अच्छा, म्यूट बीच में नहीं मुझे है। लगा मैं म्यूट हो रखा हूँ। नहीं, बिल्कुल म्यूट नहीं है। हाँ, इसको अभी देख, ठीक है। रामजे ब्रदर्स का भूत आ गया है। बेवफा बेवफा बेगम। बेगम से मेरे को याद आया कि आजकल काटजू जी जो है वो प्रियंका देव के बजाय आरफा खानुम को परेशान कर रहे हैं। अबे तू म्यूटेड है, अनम्यूट कर। काटजू अंकल काटजू मतलब चाचा ना, he chooses cheapness violence पे आ every गया month, है। one time he chooses violence. देख, मैंने फोटो भेजा प्रियंका को, प्रियंका बेटी क्या हो गया, and she just sends me a message back saying, oh shut up Abhijit. क्यों रूठ गए प्रियंका से काटजू जी? ये भी तो पता करना पड़ेगा। इस पे तो एक अलग पूरा लंबा पॉडकास्ट करना पड़ेगा कि क्या हो गया। काटजू जी ने एक नया पर्सन क्यों चूज, तो बेचारे। और Look, इतना हर्ट हो गई listen, बेगम नाम सुन के। see, this is the thing, like Begum, Mohtarma, these are normal usages in Urdu as far as I remember them. ठीक है? Yeah. Now, see, you are अपने आप तुम offense ढूंढ रही हो where none is given. Yeah. Okay, now Markandey Katju is one of the nicest people you'll ever meet. Yeah. Okay, he has these old-fashioned ideas of how Uncle G's used to talk. Maybe it's out of fashion now, maybe it's inappropriate now, but understand where he's coming from. Yeah. You just can't. I mean, fine, you can take offense. That is absolutely your right. Yeah. But look at his age. Understand where he's coming from here. What do you lose? But and what I think about, अबे किधर गया ये? गायब क्यों हो गया तू? तूने ही मेरे को गायब किया साले। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा सेंसरशिप करने की कोशिश की तूने। जैसे ही इलॉन मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में आया है, इधर सेंसरशिप शुरू हो गई है। So you'll know this if you've ever sat down and talked to Markandey Katju. He's he's kind of the guy who will take a position on a certain issue and he won't conform to any one side of the ladder. Yeah. And for him, like I've generally seen him, Begum aap kaisi hain, Mohtarma aap kaisi hain. There's no offense intended. For context, this is what we're talking about. Yeah. Now, Markandey Katju kya aadmi. For me, I think this is a bigger reflection of Arfa, who wants to see persecution, genocide, whatever, everywhere. This is not the person. What she's trying to portray Markandey Katju is not the person Markandey Katju. और Markandey Katju right wing troll कब से हो गए भाई? हाँ, exactly. Since when? I mean, the entire right wing is after him for being left wing, this, that, whatnot. He's this free spirit who does what he wants, boss. Yeah. I mean, understand his family background also. They come from a completely Persianate, Urduite family, which, is, they're really nice people. Ye un zamane ke rais hain who have a certain way. Yeah, come along, yeah. The guy is like, what, 70, 80 something. Are you seriously telling me that you don't know how that generation was? And, this was perfectly fine. I mean, you can claim that this is not acceptable today. Yeah. But look where he's coming from, yeah. Yeah. But again, I can understand that you feel like this kind of language is not acceptable. That's fine with me. But then saying ki
this is some kind of right-wing troll that's attempting genocide on the Indian Muslims. I think that's taking it a little bit too far. It's just an old guy who doesn't know how to really speak maybe today's language properly, and he's made a mistake. That's the maximum. By the way, tell me what is wrong with Begum? Uske niche even what's her name? I think Amana wrote, na, because Amana's name is literally, middle name is Begum. So she wrote Begum, Bibi, and Bey are honorific title for or means of addressing a respectable lady. It's like saying dear girl, respected lady, and we use them as surnames as well. Since carrying the father's name is not necessary, my official name is Amana Begum, is one example. तो इसका तो नाम ही बेगम है. हाँ. तो उखाड़ लो कि whole offend अब अमाना बेगम के नाम पे भी कि अमाना बेगम means Muslim genocide. But you know, like I said, this tells you more about Arfa than it does about. I mean, there is Begum Parveena Sultan. Does everybody remember? Pakistan हार गया, Zimbabwe जीत गया. Yes. Wait. किधर है? Yes. Let me see. ढूंढना पड़ेगा. मैं मैच नहीं देखता, मगर मुझे इसकी कितनी खुशी हुई है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया. Zimbabwe beat Pakistan by 1 run. Oh shit. Yes. तो पूरा अलग मीम रिव्यू करना पड़ेगा यार. मीम भेजो ट्विटर पे. Zimbabwe beats Pakistan वाले मीम भेजो. Zimbabwe beat Pakistan in T20 World Cup Classic. ऐसे इधर अच्छा लग रहा है मुझे आज इस समय. वाह. मैं दारू नहीं पीता. Cheers to that. क्या बात है. Cheers to that भाई. और किसने वो फेक मिस्टर बीन देखा कि नहीं पाकिस्तान वाला? अभी वो मीम रिव्यू में आने वाला है. डोंट वरी, वो आने वाला है मीम रिव्यू में. वाह. शाबाश. Zimbabwe have gone from 95 for 3 to 95 for 7. Wasim on a hat trick. क्या बात है. Zimbabwe have defeated. शाबाश. बहुत अच्छे. वैसे can I say something about Pakistan? Pakistani, sorry, Arfa Khanum. I did not. This was accidental before somebody accuses me of calling Arfa Khanum Pakistani. Sorry. That was actually genuinely unintentional. पहले मैं अपने चश्मे पहन लेता हूँ. Gas station sunglass number 2. तो अरफा खानुम की प्रॉब्लम ये है कि शी इज ट्राइंग सो हार्ड टू आउटडू क्या नाम है अपनी ये राणा अयूब ऑन द ऑपरेशन कार्ड ना. आई थिंक सी राणा अयूब का क्या नाम है. द रीजन शी बिकेम सक्सेसफुल इज दैट शी वाज ओरिजिनल. मतलब कम से कम उसका रंडी रोना तो ओरिजिनल था. अरफा खानुम की प्रॉब्लम क्या है मालूम है. अरफा की जो ओरिजिनलिटी नहीं है एंड शी ओवर डज इट. और वो अरफा इसके लिए अरफा कभी भी है ना वो कभी भी वो सेकेंड हैंड वर्जन ऑफ राणा यू भी रहेगी. तो उसको कभी कोई खास नहीं डालता. So apparently Pakistan failed to, by the way, Kushal, Pakistan needed 1 run or 3 runs in 3 balls and they didn't manage to score a single run in 3 balls. ट्विटर वालों कमीनो मीम भेजना शुरू करो सालो. मीम भेजो और अभी का अभी मेरे को हाइलाइट्स दिखाओ. मेरे को साला हाइलाइट्स भेजो लास्ट 3-4 बॉल की. मेरे को देखनी है. देखो मैं बिल्कुल T20 नहीं देखता हूँ मगर मुझे मैं तो क्रिकेट ही नहीं देखता यार. बट दिस इज टू फनी. खुशी होती है पाकिस्तान जिम्बाब्वे. अगर तुमने फिर से इस पॉडकास्ट पे क्रिकेट की बात की, मैं इस चूतिया पॉडकास्ट पे नहीं आ रहा हूँ, समझे ना. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नीचे किसी ने क्या ट्वीट किया है ये देखिए. अरे कुत्ते एंजॉय कर. एंजॉय यार. और उसका नाम भी है डोंट डू एपिक शिट. डोंट डू एपिक एंड आई एम सीरियस. मेरे को नहीं मालूम था. मैं कोई मैच नहीं देख रहा था. मैंने लिटरली लाइव स्ट्रीम पढ़ी. लोगों ने बोला पाकिस्तान हार गया. मैं जी खुश हो गया. उस लौंडे को ढूंढो यार, कोई जो 2019 में आया था ना. वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया. उसको ढूंढो कोई. उसका इंटरव्यू लो आज जाके लौंडे का. दुख. अब देखो
let's take it back to the topic. Yes. How many of you us watched Ertugrul? I know what it is. I've never seen it. Okay. Ertugrul is constantly called Bey. Bey. Everybody refers to him as Bey. Which in the Uzbek, that's the Oghuz dialect. In the Uzbek dialect, it becomes Beg. Now, the feminine in Mongol is Beki. In Turkic, it's Begum. It's just female leaderess. Yeah. It's like saying, "Aap hamare leader ho, aap hamare leaderine ho, ya leaderess ho, whatever." Yeah. ठीक है? So it's literally first, it's a pre-Islamic Turkic title. Okay, which is why no Arab will ever have the title Begum or the name Begum. Achha. It's distinct in Turkic and Persianate regions. So you won't have it, for example, in Iraq. You won't have it in Syria, Lebanon, and things. Okay. But Iran, because Iran is so thoroughly Turkified in a sense, you will have it in that entire Turkey, Iran, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, India belt. Khan. Okay. So, for example, Khan is not a name you will find in Arabia, Iraq, things like that. It's a Mongol name. It's a Mongol name because it's a pre-Islamic Mongol name. Khan, Khagan. Khagan was Rajadi Raja, right? Khano ka Khan became Khagan. Bey is like that. Begum is like that. Beki was the effeminate in certain things. Begum was the effeminate in certain dialects, in certain Turkic these things. So first of all, it's not even Muslim. So she doesn't even know what the etymology of the word is. Yeah. Okay. Yeah. When you call somebody something, like हम बुलाते हैं दीदी या बहन या sister या मम्मी या whatever या auntie. अगर ये अरफा को दीदी या आंटी बुलाता है, she'll say you're being misogynist and ageist. Yeah, exactly. अगर ये sister अगर काटजू उसको sister बुलाता, then she'll say he's being unnecessarily familiar. Yeah. You know, you just can't get away from win. this. Everything is a bloody insult. अब हद है यार. मेरा नाम ही है बेवफा बेगम. Yeah, there दो लोग हैं ना. I think there are two people on Twitter these days that qualify for the title of. See, every social media platform has to have one Lord and Lady of Chaos. So Markandey Katju ji is the Lord of Chaos on Twitter, and Sanjukta Basu is the Lady of Chaos on Twitter. So the current Lord and Lady of Chaos are those two. So प्लीज जो लोग लॉर्ड ऑफ केओस की पूजा करते हैं वो लोग जरा मार्कंडे काटजू को जाके जरूर फॉलो करें सोशल मीडिया पे। नहीं मगर मार्कंडे काटजू और संयुक्ता की मीटिंग करानी चाहिए एक बार हमको। द यूनिवर्स माइट इम्प्लोड। यस, मतलब क्या होगा उधर? टू मच केओस इन वन रूम। और ये देखो ये कैसे हरामी लोग हैं ट्विटर पे, मतलब चीपनेस पे आते हैं लोग। मैं इतने अच्छे गैस स्टेशन सनग्लासेस पहन के आता हूँ और लोगों को देख कैसे चीप कमेंट्स मारते हैं। एक लड़के ने लिखा है, नमस्ते कुशल मेरा, क्या आप मेरे घर वेल्डिंग के लिए आ सकते हैं? ये देख, ये श्री हरि ने Is that while you call me Begum and insist on calling you Khagan? While we do gappa. While we do gappa gap was a killer. While we do gappa. Next time nobody is going to call it anything else but gappa. While you do gappa. Oh man, it's brilliant. और ये देखो, ये एक और है श्री हरि wants me to talk like an Englishman for this program. No, he said that's no, how... he doesn't. No, he said that. Yeah, he does. No, he said how Abhijit feels right now on that cricket discussion is how the whole audience feels when Abhijit talks like an Englishman. That's what he said. He's black swanning. He actually wants me to talk like an Englishman. Is but that what it is? He can't bring himself to say it, you say. Of course.
Of course, I'm sure that's what's happening. तो ये एक मिनट, अरफा किसके लिए काम करती है अभिजीत? अरफा वायर के लिए काम करती है कि क्विंट के लिए काम करती है? वायर के लिए काम करती है ना, I think. Yes, I think she works for the Wire, but can you really tell the difference between Wire and Quint? I mean, they're all the same. Well, except I have to say one thing. You know, Wire's typeface is much easier to read than the Quint. The Quint is like, it's kind of hemorrhoids up the ass. You never know where the anus is. Never know where the anus is. You need all the boils all around, yes. so the typeset is absolutely awful. But on the subject, I wanted to send you an Instagram video, which I'm hoping you play. अरे चुतियों, तुम दोनों बात करो, तब तक मैं तुम्हारे को ये भेजता हूं। मुझे लगा तू भेज रहा है। अच्छा। But in any case, we should तो probably... मतलब अरफा को शर्म नहीं आती? इतना वायर का इस समय नाम खराब है और उसके बाद भी ऐसे स्वैग में घूमती है वो। भाई उसका स्वैग तो कब से चल रहा है? नाम खराब इज हर एंटायर ब्रांड। नाम खराब तो अभी वायर का हुआ है, बट नाम खराब इज आरफा खानूम्स एंटायर ब्रांड। तो ये देखो, जब तक नाम खराब नहीं होता तब तक मैडम का खाना नहीं पचता है। ये मैं शाम मैं हमारे ग्रुप पे भेज रहा हूँ हैं। भाई लौड़ू ठीक से बात कर। But I think maybe we should talk about the main story of today as well, which is congratulations to Ashish Nehra for becoming the Prime Minister of India. Congratulations to us. What can he not do? What can't he do? Yes, Ashish Nehra. Uski best bowling performance, played in the World Cup and now PM of UK. 6 for 23 लिए थे उसने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट, मेरे को याद है 2002-03 वर्ल्ड कप में। व्हाट फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस। और देखो टीम इंडिया के खेलने के बाद अभी इंग्लैंड का पीएम भी बन गया है। कितना अच्छा आदमी आशीष नेहरा यार। क्या मतलब, I can't imagine somebody who's more accomplished than Ashish Nehra in the world. Oh, by the way, just before we go there, ये अपना Amit Malviya has officially decided to sue the Wire. Amit, I like Amit now. शाबाश अमित, शाबाश। अमित ने लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा काम किया। Just kidding. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, so I've sent you 2 videos. First is why Urdu, everything sounds better in Urdu. So play that video. अबे क्या बकवास है। बजाओ भाई कुशल। एक मिनट मैं को खोल रहा हूँ। इंस्टा का वीडियो है ना अभिजीत? हाँ। Yeah, it's just opening. Okay. And you'll see how sophisticated a language Urdu is in this. Achha. It expresses the deep inner feelings of all Indians and people across the world in a way Sanskrit never could. मेरी तशरीफ थपथपा दे, मेरे और अपनी उंगलियों से खिलवाड़ कर तशरीफ सजाइए। शक्ति बढ़ते हैं और शक्ति बढ़ते हैं, अपना जुबानी शरबत मुझ पे बरसाइए। इस सिलसिले को अंजाम न दे, इस सिलसिले को अंजाम न दे। मेरा दम घोट दे अब्बू। बंद करो ये। क्या घोट दे अब्बू। भाई क्या ये? कहाँ सब ढूंढ के लाता है साले। बंद कर। But see, you two are such communal bigots. You two are encouraging the RSS genocide against Muslims in this country. That's true. I wanted our audience to be exposed to the sophistication of the Urdu language. Yeah. And you are such Islamophobic bigots that you prevented me from doing that. अबे तू ही तो दिखा रहा है दम घोट दे अब्बू। अब कल को आके आरफा खानूम बोलेगी कि मुसलमानों का मर्डर को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पर। श्याम शर्मा। अरे but it was said in Urdu. It was said in Urdu. Yeah. So you know. Okay. अरफा खानूम को ये वीडियो भेजो। मर्डर को प्रमोट किया जा रहा है श्याम शर्मा शो चैनल पर। Now check. आप अपना जबानी शरबत क्या? जबानी शरबत। अच्छा। Now the second video is how all bloody Indians. अरे भेजा तो है। नहीं एक ही है। एक ही है भाई। अच्छा। One second. मैं अभी भेजते हैं। अब आशीष नेहरा के बारे में भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी हमको। उर्दू BDSM।
हाँ, अच्छा, अब मैंने भेजा है. This is how अच्छा. all basically it's a very good summary of how हाँ. Indians are behaving since Rishi Sunak became prime minister. क्या बोल रहे? जो हो जा ठगले मिठाई खाने दे. पाकिस्तान के हार की मिठाई खा रहा है कॉर्डन ब्लू. सोनक बन गया यार ब्रिटेन का पीएम. अब देखियो वीजे लगेंगे धड़ाधड़, 10 दिन में करा के देगा. इतना तो कर ही सकता है इंडियंस के लिए. मुझे तो लग रहा है कि वो खुद खड़ा होगा हीथ्रो एयरपोर्ट पे कि कौन भारत से आया है, आओ जाओ. पाउंड का क्या रेट है? 100 रुपीज. मुझे लग रहा है उल्टा हो जाएगा. 1 रुपी विल बी इक्वल टू 100 पाउंड. भाई सुनने में आया बकिंगम पैलेस में ना इंडियंस के लिए नीचे गद्दे बिछा देंगे. भाई यमुना एक्सप्रेसवे को सीधे कनेक्ट कर रहे हैं लंदन ब्रिज से. सीधे फ्लाईओवर. अगले साल दिवाली मेले में पता है कौन सा झूला लगेगा? जायंट व्हील तो पुराना हो गया यार, लंदन आए लग रही है. भाई उत्तराखंड वालों को ना वीजा ऑन अराइवल दे रहे हैं वहां पे. हाँ, क्योंकि वो भी यूके है ना. यूके इन्फोसिस कनेक्शन तो पता है ना तुझे? हाँ, वो ऋषि सोनक इज इन्फोसिस का दामाद. एग्जैक्टली. हाँ, उनका प्रोजेक्ट पता है क्या है लेटेस्ट? कि भाई कोडिंग करो कि कोहिनूर को कैसे शिफ्ट करे इंडिया. कोड्स बना रहे हो, तू यहाँ ब्रो कोड ही करता रहेगा. ऋषि सोनक बन गया यार. भाई क्या है भाई? ये ठीक था. ये कोई इतना And you know what Biden called Rishi Sunak? Rashid Sunak or something like that. Rishad Sunak. Yeah. Rashid Sunak. वो अंकल है ना, वो चाचा थोड़ा ऐसे ही, पर उसकी सटक चुकी है बहुत टाइम से. चाचा ना हर सुबह मर जाते हैं और फिर उनको जो सीक्रेट सर्विस आके उनको छाती में वो मार के एड्रेनलिन मार के जगाते हैं हर साल. तो you can't expect him to be on 100% every day. He is the first cadaver to become president of the United States. Basically. This has to be one of the funniest takes I've seen in my life. एक मिनट. So जैसा हमने कहा था on the wire अमित की स्टेटमेंट आई है. This is not the funny part. एक मिनट. That's true. This is the first time someone gets sued for enhancing his reputation. अमित मालविया को चौड़ा भी दिखा दिया, सू भी हो गया. अमित मालविया को बोगैम्बो बोल रहे हैं लोग. बोगैम्बो भी दिखा दिया और सू भी हो गए. साला गजब बेइज्जती है. वो हमने कार्टून दिखाया था ना लास्ट टाइम कि उसने क्या बना दिया उसको. किसको दिखाया नहीं था? एक मिनट में भेजता हूँ तेरे को. ये देख. I think दिखाया होगा. This is Amit Malviya as per the wire. अच्छा. मैंने ग्रुप पे भेजा है कुशल. अच्छा. दिखा भाई. This is funny. ये funny है. ये देखो. CEO Meta, CEO Microsoft, CEO Twitter, CEO. भगवान. ये देखो ये किसी ने भेजा अभी. किधर है क्रोम टैब? ये देखो. Meanwhile all of India to Pakistan. आप लोग रोना बंद कीजिए. आवाज आ रही है. आप लोग रोना बंद कीजिए. आप लोग रोना बंद कीजिए. मेरे तक आवाज आ रही है. आंखें खोल लेता. Multiverse of Malviya. I like this. This is good. Multiverse of Malviya. It is not the multiverse. It is the Malviverse. This is the Malviverse. अच्छा. हाँ, ऋषि सुनक ने क्या उखाड़ा अपनी लाइफ में, जरा बात करें अभी. हाँ, ऋषि सुनक का भी उखाड़ लेते हैं भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस टू आशीष नेहरा. आई होप कि नॉर्दर्न आयरलैंड हमको गिफ्ट में दे दिया जाएगा मंदिर बनाने के लिए. नॉर्दर्न आयरलैंड में भव्य राम मंदिर और शिव की मूर्ति बनाई जाएगी. तो भगवान ब्रिटेन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि सुनक जी को. बट इन ऑल सीरियसनेस यार, लोग इतने एक्साइटमेंट में बैठे हुए हैं. क्या हो गया? क्या हो गया? लोग कितने हरामी हैं. क्या हुआ? दिखाओ. क्या हुआ? लेजेंडरी क्रिकेटर, कमेंटेटर, चैट कोच, यूके प्राइम मिनिस्टर. भाई what can't he do? आशीष भाई यार, सीरियसली.
But you know, Ashish Mehra is such a funny guy in real life. You have to see his interviews. He is a hilarious guy to watch on television. He is a house on fire. He's actually very funny, Ashish Mehra. Yeah, he should just, अगर ऋषि सुनक से कोई बदमाशी करे ना बहुत ज्यादा, तो ऋषि सुनक को रिजाइन करने के पहले he should just hand over the Falkland Islands to Argentina just to fuck with Britain. If he does get removed prematurely, he should just hand over the Falkland Islands. बस गांड मराओ, मजाक में दे देना चाहिए. लो साले गांड मराओ, मेरे को निकालना है नौकरी से, ये ले. ऐसे बोर हो रहे मैं दे दिया. बोर हो रहे मैंने दे दिया. नॉर्दर्न आइलैंड मैंने अडानी को बेच दिया और फॉकलैंड आइलैंड मैंने अर्जेंटीना को वापस कर दिया. But to be honest, there's two different kinds of reactions that I've seen. One is like people getting extremely excited, which fine, you know, I understand the symbolism of the whole thing, fine. The second thing is I've seen tons and tons and tons of comments from people. It's the same घिसा पिटा argument. कहीं पर भी कोई छोटा सा minority के साथ कुछ भी अच्छा होता है ना, तो इंडिया में शुरू हो जाता है कि when will India respect its minorities? When will there be a minority prime minister or a minority leader in India or something like that? You know, Smita Prakash called this out, Shashi Tharoor's tweet on that. And she's like, sir, Manmohan Singh was your party's prime minister for 10 years. What exactly is Manmohan Singh? And even the prime minister during that time. And mind you, the Sikhs are just as negligible a minority in India as Hindus are in the UK. Yeah. Hindus are what, 1%? Yeah. Sikhs are also around 1% in India. Yeah. Right. Plus, we've also had a Sikh president. Yeah. We've had what, 2-3 Muslim presidents to date. Zakir Hussain, APJ Abdul Kalam. You've had Christian and Parsi army chiefs. Yeah. Defense Minister George Fernandez. George Fernandez. You've had how many these things, boss? Even the Gandhi family. Remember, Rajiv Gandhi's father was a Parsi. Yeah. Technically, he's a Parsi. Rahul Gandhi is only quarter Hindu, no? He's what, half Parsi, half quarter Parsi, quarter Hindu, and quarter half Roman Catholic. Roman Catholic, yeah. And when Manmohan Singh was prime minister, let's not forget that the real prime minister was also Roman Catholic. Yes. But can I share a speech of Shashi Tharoor just to make Abhijit's point? Exactly. ये अमित मालविया ने शेयर किया था. ये बेस्ट है. अमित मालविया बहुत हरामी है. He's like, I think he's in his zone finally. Yeah, he's in a dangerous mood these days. So this was Shashi Tharoor from 2004 to 2014. $3 million a year. But the fact is that the last elections 5 years ago gave the world the extraordinary phenomenon of an election being won by a woman political leader of Italian origin and Roman Catholic faith, Sonia Gandhi, who then made way for a Sikh, Manmohan Singh, to be sworn in as prime minister by a Muslim, President Abdul Kalam, in a country 81% Hindu. $3 million a year. But तो भाई मतलब शशि थरूर डिसाइड कर लें ये कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो रहा है इस समय. कार्तिक कॉलिंग कार्तिक है भाई साहब. Yeah. But I have to say, my English accent is better than his. You know, my English is very good. I would agree with actually, that. Yes, it's very good. It's like a posh upper class accent. His, on the other hand, is an immigrant English accent. Yeah. So on the one hand, you have, and the other aspect of what Abhijit you're talking about is that when they talk about minorities, when will minorities be in important political positions? Let's be very honest. They're only talking about Muslims. They're not talking about Jains. They're not talking about Sikhs. They're not talking about Parsis or Jews. They are specifically talking about Muslims who, let's be honest, till kab tak unko minority declare karte rahenge? In what country are 200 crore people a minority? Or whatever. President hai? Zakir Hussain, Fakhruddin Ali Ahmad, who signed the emergency proclamation, APJ Abdul Kalam. 3 presidents out of a total of how many so far? 10, 11? Yeah. 12 or what you on about? 12 or 10, something like that. देखते हैं, इसीलिए तो गॉगल है ना. गॉगल है.
But yeah, exactly. Like if you're talking about somebody, a community that's an actual minority, you talk about the Sikhs, you talk about the Jews, you talk about the Parsis, वो जैन, even Christians to an extent, maybe. जैन Jain, लोग, exactly. ये मुसलमान See- कहाँ से minority हो गए यार? 200 करोड़ अरे की भाई population. लोग भूल रहे हैं अमित शाह कौन है? अमित भाई क्या है? अमित भाई क्या है? जैन है ना अमित भाई? अमित तो भाई जितना जैन है? मुझे याद है, हाँ जितना मुझे याद है अमित शाह जैन है शायद, सबसे बड़े चैट यहाँ जैन ही है. इतना told मुझे you, मालूम no, है क्योंकि शाह यूजुअली जैन होते हैं. Some say he's a Vaishnavite. सबसे खतरनाक कट्टरवादी हिंदू जो होते हैं वो वो जैन जैन होते होते हैं. जैन ही होते हैं. याद रख जो इंटेलेक्चुअल true. ढांचा था अयोध्या मंदिर बनाने के लिए वो जैन मीनाक्षी जैन मैडम ने किया. मीनाक्षी जैन, yeah. नहीं मगर created by it. the way there is a debate on that. Some say he is a Vaishnavite, some say he's a Jain. There is confusion अच्छा. about it, so we will have to clarify. But हाँ. I because I know for a fact जो शाह सरनेम होता है ना वो जैनों में भी होता है और वैष्णव में भी होता है. अच्छा. हाँ. And then don't forget Hidayatullah was acting president. Oh, that's right. Muhammad Hidayatullah, yeah. ठीक है. That's right. फखरुद्दीन अली अहमद, yeah. We had ज्ञानी ज़ैल सिंह who was Sikh. Yep. ठीक है ना. तो भाई और कितना चाहिए? It's almost like we have to do certain things that they want just to live up to their standards, which keep shifting every 2-3 years. Yeah. जाओ डूब मरो. To डूब मरो. So that's obviously the I'm a Hindu Vaishnav, not a Jain. Okay. So but Jain chief minister गुजरात में बहुत कॉमन चीज है. FYI. Yeah. हाँ. Current chief अरे minister A.R. Antule, Abdul Rahman Antule was the chief minister of Maharashtra, no? अच्छा. हाँ. अरे हाँ. So another thing. His full name is Abdul Rahman Antule. कितने दिन इसका चीफ मिनिस्टर था? किसका? हैं? He was in office for 2 मीम्स आने लग गए पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी. ये सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? नहीं वॉल्यूम तो शेयर कर साले. अच्छा वॉल्यूम नहीं शेयर किया मैंने. रुको. नॉनसेंस. साला नॉनसेंस. रुको मैं शेयर करता हूँ. हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है. बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. क्या लबे सीरी सा लग रहा है. दिल गार्डन हो रहा है. तो ऐसा लग रहा है ये नीचे हमें लोग मिला करते थे. आज वहां पे इतने गंदे तरीन लोग बैठे हुए पाकिस्तान के. गंदे तरीन. मैं क्या नाम लूं, किस का नाम लूं. मैं दिल टूट के ही रह गया. आज मैं इंडिया बैठा हुआ हूँ. अब इन लोग हंस रहे हैं कि जी मोमेंटम शिफ्ट हो गया, वो इधर चला गया, वो उधर. वो भाई हमको भी पता है तूने टीम क्यों हारी वो बता. जाहिर होता है ये बड़ी ही बकवास किस्म की बैटिंग लाइनअप है. ना इनके पास टेक्निक है ना ही टैलेंट है इनके पास. पहली बात तो ये प्लीज अपने जहनों से निकाल दे. टैलेंटेड नहीं है ये. टैलेंटेड नहीं है ये. टैलेंटेड होते तो पाकिस्तान को मैच बना के देते. मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ खुदा रहा. पाकिस्तान पे भी रहम खा, अपने भी रहम खा. टेस्ट मैच में यूं मैच खेल जहां पे विकेटें आसान है, ना बॉल गिटे से ऊपर आता है. जली पड़ी है सब. बाय द वे विजय रूपाणी जैन है. अच्छा विजय रूपाणी जैन है. हाँ वो जैन थे. शाबाश. तो मतलब आई एम जस्ट पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक इज कहां इंडिया में प्रॉब्लम रही है. ये वाईएसआर के पापा वाज क्रिश्चियन. ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्रा, नो? Yeah. YSR himself is Christian. Yeah. Both father son Christian duo. ठीक है ना? ये how many Christian chief ministers has Kerala had? Yeah, quite a few. Christian only, no? कितने सारे Christian chief minister रह चुके हैं उधर. Yeah. हैं? वही बात है. तो कहाँ ये करत है? जबरदस्ती का बकवास है. कुछ ना कुछ करना है. ये ओवैसी आके बोल रहा है कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम औरत कब बनेगी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर. अबे भाई अपने पार्टी में पसमंदा को हेड बना दे अपनी पार्टी का पहले. हाँ वो नहीं करेगा. उतना कर दे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं. उतना कर दे. या अरे पसमंदा को छोड़, पहले एक हिजाबी को अपना प्रेसिडेंट औरत को बना दे. हाँ या वो अपनी खुद की वाइफ को जर्नलिस्ट को मिलने नहीं देता. राजदीप सरदेसाई इज ऑन रिकॉर्ड that he could not meet overseas wife because his wife is not supposed to come in front of other men. और ये बंदा हमारे देश को. और let me tell you,
दिस इज द प्रॉब्लम। और इसके लिए मैंने वो ट्विटर पे ट्वीट लिखा था और वो थ्रेड लिखा था कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि व्हेन विल इंडिया सी अ मुस्लिम पीपल, भाई जब मुसलमान बनना होगा अपने आप नेचुरल फ्लो में आएगा। मगर देखो, whether Rishi Sunak is good for India is not the debate here. Every sensible person knows he's a Britisher. You know why he got elected? He's as British as it gets. Yes. If anything, he's bloody out born in British Southampton, went to one of the most expensive private schools in Britain. Like, you can't get, you know, he's had that upper class British upbringing. You remember his famous interview? I don't think I have any poor friends. Yeah. I have princes and lords as my friends. I don't think I have any poor friends. Yeah. I just think that it shows well for the Indian community, for the Indian diaspora, कि भाई Indian diaspora वहाँ जाके गंद नहीं मचाता है. Hindu. Not Indian. Hindu वहाँ जाके गंद नहीं मचाता है. हिंदू काम करता है, हिंदू कल्चर इकोनॉमी वगैरह को साला में कंट्रीब्यूट करता है, बम नहीं फोड़ता है. And this, in spite of the fact that Muslims are the second biggest minority, they're much bigger. They're much bigger than the Hindu minority in the UK. Yeah, they're 2% of the population and 19% of the jail population. More, they're about 3 or 4% of the population. Yeah, Hindus and like 19% of the 1%. prison population, and Hindus constitute 0% of the prison population. Yeah. तो ये देख लो, इसका भी जवाब दे दो. तो so that's another thing. Thirdly, यार क्या इंडिया के लिए वो अच्छा होगा? He's not even been elected. He's been selected. He has not been elected by the British people. He's just been selected by his own party के भाई, because they needed someone to save their ass and they needed a scapegoat. ये देख, religion in the UK. None 52%. Anglicanism 12%, Catholicism 7%, Calvinism 2%, Methodism, other Christian church. Islam 6%. 6% है? Islam is 6%. Hinduism is officially 1.6%. Oh wow! So there are much bigger community than Hindus. They're like 3-4 times our size in the UK. Wow. Okay. So in terms of a non-Christian denomination, they're the biggest. Okay. If you assume all Christians are second only to atheists in the UK. Yeah. And then comes Islam. Okay. Now you look at religion in India, and you have to look at everything, including chief ministers and everything. How does this work out? Hinduism is 79.8%, Islam is 14.2%, Christianity is 2.3%, Sikhism is 1.7%. 1.6, 1.7, roughly the same this thing, no? So 1.6% का उधर प्राइम मिनिस्टर बना, इधर 1.7 का प्राइम मिनिस्टर बना. 10 साल पहले ही बन चुका है यार. Exactly. Yeah. अब क्या करना है? Yeah. हाँ. Islam is 14.2% in India. Yeah. अब क्या? और here is the best thing. A Zoroastrian का बेटा प्राइम मिनिस्टर बना, एक Zoroastrian का पोता भी नियर प्राइम मिनिस्टर बना. Or Zoroastrians are 0.15% of the population. Yeah. ठीक है? अब क्या? और क्या चाहिए? And Jains, though we don't even consider a different religion, they themselves don't consider themselves a different religion. Yeah. Yeah, that's true. And the one thing I want to talk about really quickly before we go to meme review is I want to start with you, Kushal, because I have a feeling that Aam Aadmi Party is not a political party anymore. Aam Aadmi Party is just, it's a vibe. Aam Aadmi Party एक एहसास बन चुकी है. Hang on 1 second. What? My whole issue with this is that somehow we feel that when anybody non-BJP says something Hindu, instead of welcoming it, we ridicule him. No, that's not true. And I'll tell you why. I was happy when Kejriwal came out and said कि ठीक है, Ram Mandir बन गया है, we will support it. And especially when Kejriwal came out and said that we will support the BJP decision to abrogate Article 370. Most people came out and supported it. I came out and very publicly supported it. Good for the Aam Aadmi Party. Not on my Twitter timeline. On my Twitter timeline, सब गरज रहे थे डोंगी. Okay, I supported it because I was like, now
You want to play a game, that's fine. But just one second. But no, I have no issues with him playing a game. No. So what I'm saying is ki, I understand if you want to play a game, but play the game. They have become so completely transparent in how hypocritical they are कि अब believe करना मुश्किल हो रहा है. That it's not a game anymore. My it's just too issue transparent. isn't with the hypocrisy. With hypocrisy, at least you can keep incentivizing them to come in your direction. Yeah. ठीक है, तो सब चीज में एजुकेशन में उसकी ये करो, क्रिटिसाइज करो. But when he says this, celebrate it. हमारा क्या जाता है? I would much rather listen. You, by no stretch of logic, can you put a man who was against wealth on your currency note? Your currency is cursed because of that man's face. Okay. You are literally putting it's like putting a slum dweller on your currency note. A man who hated wealth, who required all his followers to get rid of wealth, and who was an A-grade hypocrite in wealth, because you remember what Sarojini Naidu said about him. He has no idea how much it cost the Congress to keep this man in poverty. Yeah. Okay. So putting Ganesha and Lakshmi and Tirupati Balaji and Kubera on our notes is a must. Yeah. Our currency is cursed because of this क्या कहते हैं उसे, Gandhi is a jinx on the currency note. Yeah. Our currency can never improve as long as his face is there. It now is waiting, like putting for Sabarmati Ashram to file a case against Abhijit. Yeah. Instead of calling it the rupee, instead of calling it the rupee, call it the daridra. Change it. Yeah, if you put Gandhi's name on a face on a note, it is daridra. Yeah. You can't put somebody who was against wealth on your note, yeah. Yeah. That's like Israel putting Hitler's photo onto a bloody shekel note. क्या चुतिया बना रहे हो किसी को? No, the point is that I don't have a problem. I don't have an issue with the idea of Ganesh Lakshmi ki photo on the currency note. That I don't have a problem with. I have a problem with, and I would be happy to celebrate it if this was what they said. But ये दिल्ली में आके, he's like the Sheikh Abdullah ना, कि दिल्ली में आके ये भाई साहब गणेश लक्ष्मी की फोटो डालना चाहते हैं. पंजाब में जाके इनके जो स्पीकर हैं वो खालिस्तानियों से मिलके आते हैं, रेफरेंडम 2020 के इवेंट्स अटेंड करके आते हैं. दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि राम वगैरह को गालियां वगैरह देते हैं. इस चीज से प्रॉब्लम है कि सब्सटेंस की, ठीक है आप बोल तो रहे हो लेकिन उसमें सब्सटेंस तो कुछ है ही नहीं. अगर आप पॉलिटिक्स के लिए भी अगर थोड़ा सा सब्सटेंस डाल देते तो मैं समझ जाता कि ठीक है चलो पॉलिटिकली ये थोड़ा सब्सटेंस तो कम से कम डाल रहा है, बट इट्स जस्ट वर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे. देयर इज नो सब्सटेंस even if they are words. Very important point that Mahindra made. It is like putting AIM's face on a gym banner. Correct. गोल्ड जिम के लोगों में अभिजीत की फोटो डाल के भेजो. Would any of you ever go to a gym that has me as its mascot? Yeah, I would. Out of morbid curiosity. Kejriwal's change in Indian politics. And you'll become morbidly fat. Yeah, Kejriwal's change as a politician is a victory of Hindutva politics, first of all. That a man as vile as Kejriwal, and believe me, I know a little bit about the man, unfortunately, because of my background in India against corruption in 2009-10. I have seen that man and how vile he is and how sly he is from second-hand and first-hand quarters at times. So, the way he changes as per where he feels he is going to be winnable and relevant. So kudos to him because he's a very smart politician. The point is that if the country has forced Kejriwal to come to a point that he has to make suggestions like these, then I think the BJP politics is finally finding its seeds. See, wo पौधा बनना शुरू हो गया अभी, and this will just go on happening. And mark my words, the next 20 years, the Congress form of politics is going to be completely wiped out, and you will have either soft Hindutva or hard Hindutva. That's all you will have. That's all you're going to have in Indian politics. I welcome this change. I could care less about AAP. I think they are a third-class party, and what they're doing in Punjab is nothing short of a crime.
What they're doing to that state of India is nothing short of a crime. But the point is that they have to make these statements says about the Indian essence and the Indian society. The Overton window, I keep on saying, the Indian political discourse, the Overton window of what was okay to discuss and utter for Indian politicians, not from the BJP, but outside the BJP. Outside of the BJP. See, basically जो गुजरात का मॉडल है ना, गुजरात में अगर, again I always use the famous story when Manishankar Iyer used to go to Gujarat, the Congress Gujarat cadre used to tell him, sir आप मुंह मत खोलना, because हमारा पार्टी अलग है यहाँ पे. Similarly, this is basically गुजरात में जो कांग्रेस है ना, वो अभी नेशनल लेवल में होने वाला है. और why would I complain? I am तो happy. मैं कौन सा, see, I will never recommend anyone to vote for AAP. I think they are atrocious. They are horrifying. But the point is, good for us as BJP. No, I agree that it's good for us. I would just wish that the Aam Aadmi Party would do it smartly, the way they did it with the Kashmir abrogation, the Article 370 abrogation. See, if you flip at regular intervals, people might still be like, अच्छा ठीक है politically कर रहे हो, but कम से कम एक shift हो रहा है. ये साले इतना transparently और इतना quickly, इतनी जल्दी flip करते हैं ना ये साले. पंजाब में कुछ और बोलेंगे, यहाँ कुछ और बोलेंगे अगले दिन. Now I want you all to remember that everything that we're saying about Arvind Kejriwal today is what was said about Mohandas Karamchand in his days. He was intolerant. He was fascistic. He used to kick out people who did not agree with him. Remember, he did to Netaji Subhash Bose exactly what Arvind Kejriwal did to those कौन पोलस्टर था जो निकाल दिया पार्टी से, प्रशांत भूषण and that one more योगेंद्र poet guy Salim. So remember, you don't remember how duplicitous Mohandas Karamchand was, how unpredictable he was, how opportunistic he was. You don't remember. If you go back, you will see the exact, and देखो महात्मा गांधी कहाँ पहुंच गया. The Indian electorate loves people like Kejriwal. Mark my words. If Mohandas Karamchand is the first father of the nation, Arvind Kejriwal is going to be become the second father of the nation. मेरे दो बाप. With the first, ये तो गोपी किशन था ना? गोपी किशन, yeah. This is going to be India in 10 years. मेरे दो बाप. अच्छा, one more thing before we start the meme review. You know, ये जो representation की बात होती है, can I ask this question? You know, the openness of Gujarat is, Gujarat में जैन CM है, Gujarat embraces them, they celebrate them, ठीक है? इंडिया में सिख सीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इंडिया एम्ब्रेसेस देम, इंडिया सेलिब्रेट्स देम. अब मैं एक बहुत अनकंफर्टेबल चीज बोलने वाला हूं एज अ पंजाबी हिंदू. पंजाब में हिंदू सीएम होगा? नहीं, कभी नहीं. तमिलनाडु में जनेऊधारी ब्राह्मण सीएम होने वाला है? कभी नहीं. नागालैंड में कोई नॉन क्रिश्चियन बन सकता है? मिजोरम में कोई नॉन क्रिश्चियन बन सकता है? ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस अलाउड है क्या बात करने इस देश में? तो ये एक, इसके लिए मैं बोलता हूँ, राजीव मल्होत्रा ने वो बहुत अच्छा वर्ड बोला था, वन साइडेड सेमनेस है ये. हम सब सेम है मगर एक तरीके से. मल्होत्रा जी ने वो बहुत अच्छा वर्ड निकाला था अपनी बुक में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ इंडिया की प्लूरलिज्म की धरोहर, और इसमें मैं मेन स्ट्रीम सिखों को भी ऐड कर रहा हूं, मगर पॉइंट ये है पंजाब में कुछ रॉटन है कि हिंदू सीएम नहीं हो सकता पंजाब का. वो जो लैंड है वहां पे, जहां पे हमारी इतनी मेजर सिविलाइजेशनल नैरेटिव है, वो पंजाब हरियाणा रीजन में. तो ये कुछ चीजें हैं, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो. ये इंडिया की जो प्लूरलिज्म है ना, इसको बेसिकली 99% इसका वजन है ना, वो हिंदू कम्युनिटी उठा के घूम रही है. Yeah, that's exactly true. That's a good point. चलो इसी पे मीमी करते हैं. हाँ चलो अभी मेमे चालू करते हैं. पहला मीम आया है वैसे रेडिट, श्याम शर्मा शो रेडिट में. ये देखो, अभी अभिजीत कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि देखो मीम में तो क्रिकेट के मीम आएंगे, इससे कुछ नहीं कर सकते. आएंगे, सॉरी. हाँ टू बैड. कैसा लगा मैच?
Arshdeep It's a great photo, man. You see, Easy है. I don't know half these players, man. मेरे को रविंद्र DK जडेजा पता है. DK जडेजा, अर्शदीप पता है. भुवी, हार्दिक पांड्या, चहल, अर्शदीप, सूर्य कुमार यादव. ये क्या कर रहा है अभिजीत? और ये साइन क्या कर रहे हैं? पीके भी. अरे क्या मीम है यार. It just got elevated by that piece of paper. पीके भी. साइन कर साले. That's so pathetic. Okay, next one is on Twitter. AIM उठ के चला गया. AIM confirmed ISI agent. पाकिस्तान की यार उससे देखी नहीं जाती. काजू का मैं ये क्रिकेट नहीं देखूंगा. क्रिकेट इससे बेहतर है. अबे मीम है. क्रिकेट थोड़ी है. एक्चुअल मैच थोड़ी दिखा रहे हैं तेरे को भाई. मैं कोई क्रिकेट का चीज नहीं देखता. काजू कतला ने ये शेयर किया है वीडियो. देखें क्या है. लेट्स सी. अबे वापस. Oh my goodness. Play it again. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste your time. Oh my goodness. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. क्या था ये भाई? मर जाऊंगा. क्या था ये? I don't even know what this was. Oh shit. ये किसका आइडिया था यार? क्या गलत assassin भेज दिया. ए कुशल, साले मर्द की तरह हंस क्यों? चक्के की तरह हंसता है साले. मेरी तरह मर्दानगी के साथ हंस साले. अच्छा, तेरी आवाज ऐसी लगती है तेरे गोटे मुंह में आए हुए. Okay, next one is alive_huckleberry_36. ये देखो मेरा देश बदल रहा है. क्या मेरा देश बदल रहा है. ए भगवान. ये सच है. If this was America, they would have shot him. वो ठुक्का लगा रहा है उसको. कहाँ है? पाकिस्तान. ये पाकिस्तान का वीडियो है. अच्छा, ये पाकिस्तान का वीडियो है. शाबाश पाकिस्तान. Talking about Kejriwal, next one is Oh man. Happy Diwali alive_huckleberry_36. हाँ भाई, क्या है? केजरू क्या बोल रहा है? फिर पलटी मारी होगी किसी चीज पे. पटाखे नहीं जलाएंगे. किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं चलाने. प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए. दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए. Please remember, do not burst crackers, protect the environment, and have fun at home with your loved ones. अबे दिवाली है. चल. Pretty much. पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि रात हो जाएगा. शाबाश. दिल्ली वालों ने तो गंद मचा दिया सीरियसली. और करो. took that shit personally. So, ये लोगों को रिवर्स साइकोलॉजी नहीं मालूम है. ये लोगों को बेसिक चीजें नहीं मालूम है कि आप जितना लोगों को ना बोलोगे लोग और करेंगे. नेचुरली ग्रेजुअली पटाखे कम हो रहे थे. Choice-handed. मेरा बहुत सिंपल है. You know how furious I get when people tell me not to eat beef, no? It was like that. मैंने बेंचो 10 साल से पटाखे नहीं जलाए दिल्ली आने से. Yeah. And the moment the bloody ban started off, I decided, बेंचो तू कौन होता है मेरे को बोलने के लिए मैं पटाखे नहीं बजाऊंगा. And I started bloody बजाऊं पटाखा. So many friends in Delhi. For only one reason. That I got told not to do it. Yep. You will not tell me what to do with my fucking money. Now, the second bonus in all of this is these two chutiyas in my house, Advait and Aparajita, they love patakas. ये फॉरेन नहीं है ना, देसी कुत्ते हैं. देसी कुत्ता. उनको कोई उनका कोई ये ट्रिगर वार्निंग शिगर वार्निंग नहीं होता है. ये वोक लोग आते हैं ना, वो काट डालते हैं वोक लोगों को इधर मेरे घर में.
तेरा जेंडर अगर इस घर में पता नहीं है ना, तेरे गांड में अच्छी तरह से ट्रक 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 के चबा डालेंगे. So, in fact, with these two, I'm scared. It's the opposite. When they see patakas, they run towards it. They're like, jab ye fulchari, the flower pot goes off, they're like, oh, hello, I want to see this. Jab udhar ladi, they're kind of not, they're neutral about. But these things that go up, they want to keep saying, ha, kaisa chal raha hai? They have no fear of patakas. Yeah. I have so many friends from Delhi who said, ki yaar, man, I haven't burst crackers for like 5 or 6 years. They only started like 2 or 3 years ago again. There is an argument that a lot of dogs, ठीक है, तुम्हारे कुत्ते ऐसे नहीं हैं, पर बाकी कॉलोनी के कुत्ते हैं. Now the thing is, we have our local our residents association. We have this thing कि we feed our dogs, ठीक है. We give them, we socialize them to everybody who comes in here, because, and especially because हमारे यहाँ काफी चोरियां हुई हैं, and our watchmen who we keep paying keep sleeping on the job. So we are very grateful for these dogs barking at people. Number 2. So what we decided was, okay, my dogs may like it, but a lot of dogs here do not. So 3-4 days before Diwali, we started giving Alprax to the dogs like the vet recommended. They were all completely fine on Diwali day. So everybody took a dog into their house or compound, udhar hi rakha. We doped them up with Alprax and they were fine. So, sure, it is cruel on dogs, but then why don't you find creative ways of solving it by giving them Alprax and things like that? Caring for dogs is not just saying मैं पटाखा नहीं फोड़ूं. अबे यही भोसड़ी के साले न्यूयॉर्क में जाके वहां खड़े हो जाएंगे, ये टाइम स्क्वायर में, वहां पटाखे देखेंगे सारे. टाइम स्क्वायर में पटाखे फटने में किसी का कुछ नहीं होता. वहां तो साले 2-3 हजार डॉलर का टिकट कटवा के जाएंगे उधर पटाखे देखने के लिए. लेकिन यहाँ एक दिन पटाखे फोड़ लिए तो सबकी गांड फट जाती है. किसको चुतिया बना रहे हो भाई? नेक्स्ट जो लोग यहाँ पे दिल्ली में बोलते हैं ना कि मेरी जान पहचान की एक लड़की है, इतनी बकवास करती है कि इंडिया में पटाखे मत फोड़ो, फुकेट में जाती है न्यू ईयर के पटाखे देखने के लिए. Second, you don't want patakas, the noise and disturbance at night after 9 o'clock. ठीक है. Then why shouldn't every bloody Zilla Parishad ka mukhiya, using the budget given for the Zilla, set aside something for crackers and have a public fireworks display? बच्चों को बुलाओ, हर एक बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, एक फुलझड़ी के साथ एक ऊपर जाने वाला ये करो, एंड एवरीबॉडी कैन कम एंड वॉच इट. वही है यार. ओके, नेक्स्ट वन है ब्रोहन 28. फोटो है, उसका कैप्शन मैं पढ़ूंगा. पहले फोटो शेयर करता हूं. फोटो ये है, कैप्शन है, ऋषि को बोलना घबराना नहीं है, मोटा भाई से कह के 200 MP का प्रबंध करवाए हैं. इसमें अमित शाह को डालना चाहिए था. वो अमित शाह का जो स्कूटर वाला मीम है ना, वो डालना चाहिए था. 200 MP का प्रबंध करने जा रहे हैं मोटा भाई. By the way, apparently Narayana Murthy was insufferable when he met this thing, so he's never publicly endorsed the BJP. He had a whole list of demands on what all he wanted before he endorsed the BJP. Really? पता है? There is इसका साला जो है, क्या नाम है इसके, ये ऋषि सुनक का खुद का साला, तो ये इसने बनवाई थी ना मूर्ति लाइब्रेरी हार्वर्ड में. एंड हु इज द हेड ऑफ मूर्ति लाइब्रेरी? Cornell or something, that Witzel guy or something. Sheldon Pollock. One of the biggest anti-Hindu professors in the West. So, is like the head I of the told Murthy you, fucking library. This fellow has huge social climbing ambitions. That entire Murthy family are compulsive social climbers. Please. So, chalo, at least he apparently made a demand कि he'll be made president of India or something like that, some shit like that he wanted. But कम से कम उसका खुद नहीं बना, खुद उसका family नहीं बना, कम से कम उसका दामाद तो बन गया. Yeah. Social climbing ambitions come true finally. Okay. Time for Rishi memes. By the way, do you remember when Kamala became vice president? उसका uncle का बहुत ये चल रहा था. वो video, his uncle who works at IDSA at Manohar Parrikar Institute of Defense Studies. How he endorsed her and he's so cute and this and that. Somu uncle or Momu uncle or something like that. जब president बनी उसका कुछ नहीं चला ना, कुछ नहीं हुआ. उसके बाद he's faded into oblivion. शाबाश. चलो अभी ये देखते हैं. Satire सारथी ने बनाया.
Yeah, I'm a crack addict. Total crack addict. I'm a total crack addict. We actually Rishi Sunak है क्या? I'm a total crack addict. Enjoy your Prime Minister, UK. Good job. This is an old pic of Virat Kohli with Rishi Sunak. There we go. Virat Kohli with Rishi Sunak. अरे यार ऋषि सुनक कितना टैलेंटेड आदमी है. Such a talented person. The next one is on Twitter. This is इसके लिए तो आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच और स्पेशल हो गया है. ये पूरी स्टोरी अभिजीत पढ़ने वाली है. ये पढ़ो. On to the next challenge. ये इस आदमी को पढ़. As Zimbabweans, we won't forgive you. You once gave us that fraud Pak Bean instead of Mr. Bean Rowan. We will settle the matter tomorrow. Just pray the rains will save you. What happened, brother? They gave us Pak Bean instead of Mr. Bean as one of our local events called Agricultural Show. What the fuck is Pak Bean? This is Pak Bean. This the fuck is Pak Bean who imitates Mr. Bean stealing people's money. So apparently they thought that they're going to get Rowan Atkinson, the real Mr. Bean. But instead of Rowan Atkinson, they got this Pakistani guy who pretends to be Mr. Bean. And they just took a bunch of money. And they thought he was the real Mr. Bean. एक मिनट उसका वीडियो निकाल रहा हूँ मैं. They got swindled, basically. Mr. Bean की पाकिस्तानी कॉपी. मगर मस्त आदमी है. पाकिस्तानी इतना हराम खोर है. ये देख इस गांडू को देख. Yeah, he's like driving around acting like he's the actual Mr. Bean. Oh shit. Hello. Mr. Bean. I like it. चुतिया कटा पूरे देश का भाई. चुतिया कटा पूरे देश का. They even got him a police escort. Yeah, they got him a police escort. They paid him a bunch of money, thinking he's Rowan Atkinson. And he's not Rowan Atkinson. Mr. Bean. This is so funny. हरामियों ने नकली मिस्टर बीन चिटका दिया. You know, you have to admire Pakistan's खुदसा. इन अमेरिकनों को चूतिया बनाया. 20 साल उनके सोल्जर्स मारे और उन्हीं का पैसा लेते रहे. ठीक है. चाइना का चूतिया बनाया इन लोगों ने. ठीक है. I think after the Vietnamese who were able to defeat every great power, China, France, America, one after the other, dhadadhad, I think Pakistan is the second best country in making chutiyas out of superpowers. वियतनाम चूतिया नहीं बनाता. ये लोग स्पेसिफिकली चूतिया बनाते हैं. हाँ, वियतनाम चूतिया नहीं बनाता है. पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से लोगों को चूतिया बनाते हैं. रशिया को चूतिया बनाया अफगानिस्तान में, अमेरिका को चूतिया बनाया अफगानिस्तान में, चाइना को चूतिया बनाया खुद पाकिस्तान में चूतिया बना रहे. खुद को भी चूतिया बनाते हैं. That's the side effect of being so good at चूतिया बनाना. That is, you know, it's natural. You have to practice somewhere. No, you have to practice in the home turf before you go international. It comes with you have to win territory. Domestic matches. You have to first win. You have to win ये क्या internal cup, Ranji cup, Ranji. रणजी पहले जीतना पड़ता है. पहले इंटरनेशनल जाने से पहले रणजी विन करना पड़ता है ना, उसकी तरह. So first they have to make themselves चूतिया, उसके बाद दूसरों को बनाते हैं. Next one is by former importance. अरे ये किस लाइन में आ गए भाई साहब. ये टाइटल है और ये फोटा है. ये देखो. Suchitra Vijayan. When did Diwali get this decade and why is everyone dressing up like it's their wedding? Sangyukta. Shut up.
Stop this deliberate provocation just because your NGO business in foreign land runs on Hindu-Muslim headlines. Look I at that refuse to shit. let India's political discourse be hijacked by such dangerous hate mongers engaged in such low-level jeering. Shame on this. She's You like go, just- girl. She's in a dangerous mood, man. She's feeling very dangerous these days. There's no saying what the Lady of Chaos is going to do. There's no telling. If the Lady of Chaos will bless you or the Lady of Chaos will curse you. You have no idea. अच्छा, एक पर्टिकुलर मीम जो तूने भेजा है वो नहीं खुल रहा है. अच्छा, कोई नहीं, दूसरा वाला खोल दो. अच्छा, अभी okay, this one is by puzzleheaded_tip full record. मैं लिटरली ये जो इंसिडेंट हुआ, मैं उधर ये इंसिडेंट चालू होने के कुछ देर पहले मैं अपना दिवाली का काम करके चले गया था. और ये जो फ्लैग वाले आए हैं ना, आई लिटरली सॉ देम एंटर. Oh, did you really? Try to disturb Diwali celebration by Indians in Canada. किधर हुआ था ये? वेस्टवुड मॉल, मॉल्टन. मॉल्टन किधर है? टोरंटो के पास? मिसिसागा. अच्छा. पुलिस आई थी उधर. अच्छा, हाँ, you can see it in the video as well. क्या बात है. जय हिंद, जय हरियाणा. जय हिंद, जय हरियाणा. मैं जट्टों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे बाजू में भाई बंद जाट है, उनसे पंगा ना लो. तुम भी पागल हो, वो भी पागल है. एक ये साइड के पागल है, एक वो साइड के पागल है. और मेरा हरियाणा के लोगों से मेरा तो बहुत इंटरेक्शन रहा है. मेरा पर्सनल बिलीफ है वो थोड़े से ज्यादा पागल है. वो पंजाब वालों से मैं तेरे को बोल रहा हूँ, थोड़े से ज्यादा पागल है. ये तो नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे. उसमें क्या हुआ, पुलिस ने डिवाइड कर दिया था दोनों साइड्स को, ठीक है, अच्छा, शांत करने के लिए. उसमें एक हमारा हरियाणा का तेरी मानो, वो पुलिस को भी कॉर्डन को छोड़ के उधर चले गया. बोला मैं देखता हूँ तेरे को साले. And the fact that Canada, which is basically Khalistan Central में there's so much pushback. नहीं, pushback नहीं, they were outnumbered. The Khalistanis were outnumbered for a change. Outnumbered like crazy. मैं तेरे को मैं यहाँ पे वो वीडियो शेयर नहीं करूंगा. मैं तेरे को, and by the way, if you watch मैं तेरे को और अभिजीत को एक वीडियो भेजता हूँ. मैं तेरे को एक अभिजीत को वीडियो भेजता हूँ जो लिटरली क्या हो रहा था. ये जो शुरू हुआ है ना, उसके 5 मिनट पहले मैं और मेरी वाइफ, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिनर से आ रहे थे बर्लिंगटन से मेरी वाइफ की फ्रेंड को मिलके, और हम लोग हाईवे पे है ना अमेजिंग फायरवर्क्स देख रहे हैं. तो वी जस्ट फॉलोड द फायरवर्क्स, और हम वहां गए और हमने रोड में एंट्री की, और हम लोग देख रहे हैं, अरे ये तो पूरा साला वेस्टवुड मॉल ही टेक ओवर कर लिया ये लोग ने. और वो मॉल बहुत बड़ा है. अच्छा. पूरे मॉल के पार्किंग लॉट में फायरवर्क्स हो रहे हैं. एंड देन वी जस्ट टुक अ लेफ्ट टर्न, एंड व्हेन वी टुक अ लेफ्ट टर्न ना, माय वाइफ टोल्ड मी लुक द खालिस्तानीज आर कमिंग. और हम चले गए. हमने बोला क्या, हमको क्या लेना देना. एंड देन सडनली आफ्टर अ व्हाइल आई गेट दिस वीडियो फॉरवर्ड. अरे बोला ये तो मॉल है, इधर ही हुआ अभी. Oh shit. अच्छा सुन, कलवे तू फॉरेन में ड्राइविंग जानता है? नॉट बैड. हरामखोर, शट अप. नॉट बैड. हमारा काला लड़का ड्राइविंग गाड़ी चलाने देते हैं वहां पे. I thought he was going to say ये दूसरी बात है. हाँ, पता नहीं, अभी तक पता नहीं कितने लोगों को मार चुका अपने गाड़ी से. See, just like Khalistanis are cuckoos of one type, Haryanvis are extreme nationalists. They have a little Don't mess with them. I can हरियाणा only वालों में tell थोड़ा you. extra कुकू है. वो साले ऑस्ट्रेलिया में जाके लड़ाई करते हैं, कनाडा में जाके पेल देंगे. कोई भी जाट एंड गुजर से पंगा नहीं लेना चाहिए. The other thing I would also say, they put on their, इसीलिए कार में ना लगाते हैं आफ्टर विस्की जाट इज रिस्की, जाट मोबिल, things like that. ठीक है. गुज्जर So number in my 1 car, Yeah. in my new car, I've actually commissioned a whole set of stickers. गुजर मोबिल, जाट मोबिल, आफ्टर विस्की, जाट इज रिस्की, ये सब स्टिकर्स मैं उसके पीछे लगाऊंगा. वही है. मैं बोल रहा हूँ ना, यूपी बिहार में थोड़ा पैसा आने दो. अभी यूपी बिहार का कॉन्फिडेंस लेवल कम है, क्योंकि यूपी बिहार में पैसा कम है. पैसा आने दो, वहां से भी वैसे ही पागल निकल कर आएंगे. हाँ, बहुत अच्छी बात है. मैं तेरे को let those two states get some money.
ऑटोवा में मैं टॉक पे गया था, उसके बाद एक फेस्टिवल चालू था, मैं फेस्टिवल गया था, वहां पे मेरे को एक हरियाणवी जाट मिला था। तो मेरे को बोलता है, बोला क्या खालिस्तान की आप टेंशन लेते हो, हम बैठे हैं ना। हम बैठे। मैंने बोला ये तुम लोग कब से आगे? बोलते नहीं हम बहुत आ रहे हैं अभी इधर, आप डरो मत, अभी हम हरियाणा वाले बहुत है साला, न्यूजीलैंड वगैरह में भी आजकल काफी है। मेरे को मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, मैं उसके ऊपर ही हंसना शुरू हो गया। बोला तुम दोनों पागल भाई लोग। तू देख, हिस्टोरिकली हिंदू क्यों हिंदू रहा हिंदुस्तान में? क्योंकि जो भी आता था, नो मैटर हाउ मच दे लॉस्ट, पता नहीं कितने उनके मम्मी पापा को मार डाला गया, हरियाणवी रुक के उनकी मैया चोद रहे थे ना जब भी वो खैबर पास से आ रहे थे। तो तब से 1000 साल से वो जाट लोग अब हिंदुओं के लिए उनकी मैया चोद रहे हैं। Yeah, so exactly. a salute to all our Jat brothers all and our sisters. Haryanvi Jat friends. Yes. Yes. Which is why we will always support after whiskey. Jat is risky. जितना whiskey चाहिए ला हम देंगे. We owe it to you, boy. The moment I saw this video, right, I did not know who was involved. I actually told my wife, there is only one community who can be as pagal. Yeah. On the other side, when it's the nationalist side, it is Haryanvi Jat. हरियाणा वाले। And I will also say there are other versions of this same video जो आपने दिखाया. There are other versions of this video जहाँ पे इंडियन साइड में भी 4-5 सिख भी खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि it's just 100 versus 0. हमारे सिख भाई भी अभी जब से जाट भाई आगे तो सिखों ने जाट भाई आगे तो जो नेशनलिस्ट वाले हैं ना उनमें भी थोड़ा हिम्मत आई है। वो भी खड़े इंडिया का झंडा लेके भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं। On a very serious note, अभिजीत, मैं तेरे को तो वो वीडियो भेजा था ना दिवाली का व्हाट्सएप पे, वो लिटरली वो वही स्पॉट है जहाँ पे ये झगड़ा हुआ है, ये वो पार्किंग लॉट है जहाँ पे वो झगड़ा हुआ। तू लास्ट के अगर 5 सेकंड देखेगा ना तो तेरे को एक खालिस्तानी ऐसे अंदर ड्राइव करते हुए दिखेगा उसमें लास्ट 5 सेकंड में। तो इट्स ओके, इट्स ऑल गुड। अच्छा नेक्स्ट वाला है AM some design नंदू भाई ओपी। ओके नंदू भाई ये मगर मस्त है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इफ यू अंडरस्टैंड इंडियन सिनेमा, जीतू नंदू। Which side are you on? This is amazing. This is brilliant. This is so good. Meme, dude. Happy what enough. a meme. Happy enough. Straight away happy enough. Which side are you on, Jeetu and Nandu? Brilliant. यार जीत गया ये आज का winner है। I remember मेरे को I was initially on Nandu side, but I feel bad for Jeetu in this movie. अबे चूतियों ये है क्या? तेरे को पता नहीं चलेगा साले, वीडियो भेजेंगे, तेरे को ये वीडियो भेजेंगे, ये पिक्चर का एक कॉन्फ्लिक्ट है जीतू और नंदू का, और ये लोग ने इसको क्या लेवल पे लिया है। अरे जबरदस्त है, जबरदस्त। ये अक्षय कुमार है ना? अक्षय खन्ना। कोई बोल रहा है जीतू विंस, कोई बोल रहा है जीतू विंस, कोई बोल रहा है नंदू विंस। अरे बाप रे, हमारी ऑडियंस भी बटी हुई है। And the other guy is that आफ्ताब शिवदसानी। आफ्ताब व्हाट? शिवरमानी। अच्छा हाँ, आफ्ताब शिवदसानी। अरे सब all Sindhi names end with ani, no? So कुछ था। हाँ कुछ ना कुछ तो let us know what side are you on, Jeetu side, Nandu side? Please let us know in the comments and in the live chat. I have to say Nandu wins. Nandu is the underdog, but I did feel bad for Jeetu. But this entire session has gone over my head between cricket. Abhi, this is a film called Hangama. It's a vernacular film. Dude, it's a great film. Great film, and this wonderful film. Jeetu versus Nandu fight scene is legendary. It's legendary. It's one of the greatest moments in Indian cinema. Is the Jeetu Nandu fight scene? Yeah. Yes. It's one of the greatest moments. Okay, next one is by Ankush_567. Nice ad. Okay. क्या अच्छा था इस ad में? A lot of wild advertisements, but this may take the cake. More, introducing the Flowbee Precision Haircutting System. Get that freshly sucked hair you've always dreamed of without leaving the house. You can suck your whole family, mom, sister, and watch Uncle Steve suck himself. Looking good, Steve. Watch Uncle Steve suck himself. That's a lot of sucking. How the hell did you put that on TV, man? किसको साला peer review नहीं करवाया? Watch Uncle Steve suck himself. Okay. You can suck your whole family. This one is again on Sham Sharma show Reddit by Forsaken
_garage-676. Yeah, this actually happened. Yeah, this is actually quite funny. उल्टा है उल्टा है उल्टा है उल्टा अबे बैग गुल्टा है साले और इनको कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए So mean. So No, mean. that's great. I thought that's wonderful. Well done. Well done. Abhi, somebody shared a photo of Gilgit-Baltistan and how beautiful the fall is there. It's time for the return. It's time for the return to happen. Bahut ho gaya. It's time to it's high time Indians enjoyed a good, autumn weather in Gilgit-Baltistan. What's next? दिखाना हाँ लगा रहा हूँ. Next is by Slava_only me every time to Sham, Abhijit Iyer and Kushal during Sham Sharma show podcast on Thursday. Okay, क्या है भाई तू क्या इतना जज्बाती क्यों हो क्या रहा है? बोलता है ये? सबसे जरूरी है सभ्यता. ओके. सबसे जरूरी है सभ्यता. आपकी बातचीत की एक तमीज होनी चाहिए. संस्कार की कमी हो गई है. संस्कार बिल्कुल गायब हो गए हैं. और संस्कार देखिए बहुत जरूरी है. अगर आपके अंदर संस्कार नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों को कहिए तेरी माँ का. So I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. But local I like that. I like that. अगर अपने देश में संस्कार नहीं होंगे तो तेरी क्या होगा? तेरी माँ का. Beautiful. Oh my God, this is insane. Charming beautiful. _advisor_955 dank dot है क्या भैंचोद? This is literally what it says. मगर ये क्या पागलपन है? ये फोटो ये देख. क्या है? हैरी पॉटर और उसकी माँ का भोसड़ा. No fucking way this is real, man. I'm sure this is not real. It looks real though. It actually looks real. ये दूसरा this is my favorite of the day. This is my favorite of the day. क्या ये यार? बढ़िया है. इसको तो हैप्पी It एंड actually मिलेगा. looks real. इसको हैप्पी एंड मिलेगा. हैरी पॉटर और उसकी माँ का भोसड़ा. Oh fuck. ब्रोहन 28 ने एक और शेयर किया है. मॉम. This is too funny. एक मिनट फोटो लगाता हूँ. फोटो का नाम है मोहम्मद कोहली जिन्ना पाकिस्तान ऑफिशियल न्यूज़ फादर. मोहम्मद कोहली न्यू फादर ऑफ पाकिस्तान. कुत्तो इतने हरामी लोग हैं ट्विटर पे. इतने हरामी लोग हैं. ये क्या है? अरे न्यू फादर ऑफ पाकिस्तान has been created in the last week. His name is Mohammad Kohli. Mohammad Ali Kohli. एक मिनट और 2-3 है ना ट्विटर पे अच्छे आए थे वो मैं तेरे हैरी को दिखा पॉटर रहा एंड था. लुंगी में वाईफाई. अरे this is a take on that BuzzFeed का हमने last week किया था ना. हैरी पॉटर. ये बहुत फनी है. किसी ने ये लौड़े के मीमर ने शेयर किया है. लौड़े का मीमर. ये देख अभिजीत अय्यर मित्र लौड़े राणा यू. The goddess of chaos. सारा ध्यान उनकी तरफ. I told you I liked Sanjukta Basu. I've always liked her. I know Okay, clearly. ये बेस्ट है. ये देख ये शाम तेरे लिए है. ये लौड़े का मीमर ने तेरे लिए बनाया. हम दिल दे चुके सनम.
जामू सुगंध प्रेजेंट्स हम दिल दे चुके सनम। अरे यार, very nice. This is a happy enough as well. Good meme. सारे लोग, सब लोग लव ट्रायंगल में। साला इस पॉडकास्ट में हर एक आदमी लव ट्रायंगल में है। एक मिनट, संबित ने फिर से किसकी ले ली है? अब संबित ने क्या किया भाई? संबित किसी न किसी की तो लेते ही रहता है ना। रोज किसी ना किसी की ले लेता है। संबित का यही काम है। That's his official mission. एक मिनट, ये क्या किया भाई? ये क्या है? ये किसने भेजा? किस पार्टी बना रखी है? आप उससे लड़िए ना। और आपने तो ऑल इंडिया क्या ABCD कोई पार्टी बना रखी है ना। AI के क्या है उसका नाम में भूल गया। हाँ वही वाली वो बना तो रखी है सारी अल्फाबेट में लगा करके। अरे भैया, आपने सारे अल्फाबेट लगा के पार्टी बना रखी है, उससे क्यों नहीं लड़ते हैं? आपको RSS से क्यों लड़ना है? आपको RSS से क्यों लड़ना है? सारी अल्फाबेट निकाल के पार्टी। संबित कुछ भी बोलता है, सारे अल्फाबेट लगा के रख लिए। But he's great fun. He is great fun. That's why he's always on all the debates. That's why. अरे कल तेरे को पता है शहजाद ने एकदम चुप करवाया था एक आपके he was called a फर्जी मुसलमान. Let me send this to you. हाँ, शहजाद was. I'll send this to you. 1 second. ये देख, ये बहुत मजे का है। 1 सेकंड। ये हाँ, तुम लोगों का नाम क्या है? श्याम शर्मा शो। हाँ, भेजा अभी। भेज उस पे। देख, प्ले कर। हाँ, रुक जा। शहजाद ने क्या किया है? ओके, एक मिनट रुको, प्ले कर रहा हूँ। शहजाद भी आजकल बैटिंग अच्छी कर रहा है। हाँ, शहजाद भी फॉर्म में है 1.5 साल से। जिसका नाम शहजाद है वो तो श्रीलक्ष्मी का विरोध तो करेगा ही। जो आगा खान का औलाद है वो तो गणेश जी का विरोध तो करेगा ही। Keep your voice down. जो दूसरे को सीजनल हिंदू कहता है वो खुद हिंदू है ही नहीं, तो अनसीजनल हिंदू के साथ इसका क्या प्रॉब्लम है? मैं आ जाऊं क्या? अपनी पर देखिए, इस पैनल में सब हिंदू है और एक फर्जी हिंदू है। अच्छा, और जब गणेश जी और लक्ष्मी जी का सम्मान एक मुस्लिम देश कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। नाविका जी, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है आगा खान साहब। वो एक मुस्लिम का एक ब्रांच है। अब जो कार्रवाई नुपुर शर्मा पे की गई थी, जिस व्यक्ति ने एक टिप्पणी की थी, मैं चाहता हूं कि ऐसी टिप्पणी इन पर हो जो तथाकथित देश के सेकुलरवादी है वो बताए। दूसरी बात, मेरा नाम बिल्कुल शहजाद है। मैं जनजात और धर्म से इस्लाम फॉलो करता हूं, पर मैं आपको पूछता हूं अभिषेक सुधीर जी, आप तो बड़े हिंदू हैं ना, मुझे 2 बातों का स्पष्ट जवाब दीजिए। पहला, जिस व्यक्ति ने राम के अस्तित्व को नकारा हो और हलफनामा दिया हो और हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम कहा हो, और जो पार्टी जिहाद कहती है गीता को, उस पार्टी को आप क्या कहते हैं? दूसरा मुझे बता दीजिए, जटाटवी जलद जल प्रवाह पावितस्थले भयव लंबितम भुजंग तुम मालिक। अब आगे की 2 पंक्तियां जो है इस श्लोक की, शिव तांडव स्तोत्रम की, आप तो बड़े हिंदू हैं, मैं तो छोटा सा छुटवैया मुसलमान हूँ। बताइए आगे की 2 लाइन क्या है शिव तांडव स्तोत्रम की पहले श्लोक? अभिषेक सुधीर जी, अभिषेक सुधीर जी, जवाब। मैं नहीं बता पाऊँ। एक सेकंड यार, अच्छा, आप रोज टीवी कभी किसी मुसलमान से मत कहिएगा। एक सेकंड नाविका जी, कभी किसी मुसलमान से आइंदा से किसी भी शो पर, और खास करके आपके शो पर, कोई किसी मुसलमान से उसके संस्कृति के विषय में इस प्रकार की अपमानजनक बातें ना करे। जिनको शिव तांडव स्तोत्रम नहीं आता, जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता, जिनको ये सारे श्लोक नहीं आते, वो एक भारतीय मुसलमान से तो कतई इससे डिबेट ना करे। शाबाश शहजाद, शाबाश। बहुत अच्छा किया उसने। इस तिरंगे शाखा के पीछे यही संदेश है कि पहले हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। अभिषेक क्या लिटा के मारा भाई। शाबाश शहजाद, वेल डन शहजाद, वेरी वेल डन। लड़ना बहुत। You know, all these there's this whole bunch, संबित, शहजाद, गौरव, बहुत धड़ाधड़ करके देते हैं यार ये लोग। That's why they're on all the debates, man.
They're just really good. They're just really good. और ऑनेस्टली संबित को देखने में बहुत मजा आता है, शहजाद को भी देखने में बहुत मजा आता है. Lots of fun. Lots of fun. Hopefully अगले meme review में शहजाद will feature more as well along with Sambit. It's great अरे fun. एक ट्विटर हैंडल बनाओ यार कोई, बस डेडिकेटेड टू संबित पात्रा. हाँ. संबित पात्रा वीडियो क्लिप्स ऐसे करके कुछ. हाँ, बनाना पड़ेगा एक. बेस्ट संबित पात्रा के जो बेस्ट वो हमारे साथ शेयर किया करो, हम मीम रिव्यू पे एक ना एक तो दिखाई देंगे हर हफ्ते. We'll show one at least. तो वो तो आ ही जाएगा. खत्म हो गए क्या मीम सारे? Yes, all done. हो गया ना? अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह आया भाइयों? एक क्वेश्चन किसी ने नहीं डाला थे था यार, actually. और मुझे जोर से सुसु आया है. तो करके आओ ना. तब तक मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ जल्दी. तुम लोग क्वेश्चन देखो, मैं सुसु करके आता हूँ. एक दो इधर आए थे, मैं जल्दी से वो ले लेता हूँ. There weren't a lot of questions, but I saw a couple. Let me just see if I can pull a couple of them up. किसी ने भेजे हैं क्वेश्चंस या नहीं भेजे हैं? क्वेश्चन नो क्वेश्चन. दिख रहा है कुछ? नहीं. नो क्वेश्चन. ये क्या है भाई? Thoughts on the Kanye West situation? Yeah, I genuinely think that guy is mentally ill and that guy needs help. Like that man is like a walking cry for help. So I think he needs to be, people that are near and dear to him need to take care of that guy. That's what I think. Obviously, people might agree, might disagree, but I think that guy needs mental help. What else is there? मैं पूरा पीछे जाते हैं, पूरा पीछे जाके चेक करते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं. Rishi Sunak brought back Suella Braverman comments, but that's the whole point that I'm telling you, yaar, कि this guy doesn't really have that much power in his current government. He has not been elected by the British people. He has been selected by his party for a very specific purpose, which is to stabilize the economy and to act as a scapegoat for the upcoming elections. If they lose the upcoming general elections, they can blame it on Rishi Sunak. Rishi Sunak, they failed. That is why we are fielding this particular new candidate and not Rishi Sunak. This is Rishi Sunak's entire purpose, is to act as a stabilizer and a scapegoat. And he has no real power because he has not been elected by the people. Till the next election, if he wins it, which is, I think is... Yeah, unless he's like Varys from Game of Thrones. Game of Thrones is way into winning the election somehow. I don't know. I wouldn't give him. Currently, I think I read some poll somewhere which said that 40% of the polled adults in the UK said they will vote Tory, and about 54% or something said that they would vote Labour. So Labour, at least opinion polls में तो काफी आगे चल रहा है. So who knows what happens in the next year or so, whenever the general elections are set to happen. When's the next UK general election? I thought it was 2024, but somebody said it could be as late as January 2025. So I read somewhere on the Spectator or something that it could be as late no later than 2025. Yeah. What else is there? Any other questions? Do you think, the Technocrat is asking, do you think that the adventures of Tintin comics, the Asterix comics are relevant in the Indian political scenario? How do you think they're relevant in the Indian political scenario? I'm not entirely sure. Look, Tintin wasn't so much internal politics as it was external politics. Remember, a lot of what Hergé did was colored by the German occupation of Belgium. It affected him quite deeply, which is why when you look at, for example, he always juxtaposes, Sildavia with Borudia. Yeah. And Borudia is a very transparent copy of Nazi Germany. In fact, if you look at the aircraft that they're flying, they're Focke-Wulf 109s. Sorry, Messerschmitt 109s and Focke-Wulfs. So it's
it has more to do with the international situation. So, for example, the line he takes about how the Chinese are persecuted versus the Japanese. He shows off all the Japanese atrocities in the Blue Lotus and things like that. Right? So it was, but it didn't start off that way. If you go back, because remember, Hergé was Belgian. You read Tintin in the Congo, there is absolutely no exposition of Belgian atrocities in the Congo. It was a very racist. In fact, Tintin in the Congo is the very first of the Tintins, I think. It was super racist. Yeah. Showing black people as subhuman, whatnot, God knows what else. Yeah. Okay. So it's a reflection of this, European duality. Ki Belgians who had the worst administration in the Congo, whose king was the most rapine, genocidal king they ever had, is glossed over completely. But Nazi Germany is bad, Japan is bad, and kind of gets rehabilitated because of his anti-Nazi stand and things like that. I think Asterix has much more global relevance and is a lot less. Yes, I agree. Because you know what? The greatest, in my opinion, is the greatest comic book series of all time. Me too. Yeah. You know why? Notice every single people and tribe depicted in Asterix have huge numbers of positives about them. Yeah. The Romans are the arch villain out there, but they'll show you literally the Gauls are going to Rome and they're looking at Roman order and Roman roads and Roman things, and they're genuinely astounded. They're genuinely impressed. And very frequently Romans are good guys there as well. They go to Egypt and there is nothing derogatory about Egypt out there. They come to India, there's nothing derogatory about India out there. Sure, it plays to stereotypes. Have you ever read the Asterix and the Legionnaire? Have you read that one? Yeah, where he goes off and joins the Legion. No? Joins the Roman Legion, and the funniest thing is the Egyptian guy who has been actually captured as a slave, but the whole comic he believes that he is at a expensive inn. So exactly. And I like the way because he doesn't understand the hieroglyphics. He doesn't understand the language, so he thinks he's at an inn. So he keeps ordering, can I get better food? This food is horrible. He said, this is the worst inn I've ever been to. They keep exercising us early in the morning. What the fuck kind of inn am I at? And it's just funny because they never play that brown guy for laughs. Exactly. Yeah. Exactly. So it's and the pirates. The pirates are a mixed. Pirate sinks that pirate ship that Obelix always sinks. It's always a mixed bunch of pirates, including the black pirate and things like that, where they don't give a damn about race. And remember, Goscinny and Uderzo started very early. At a time when racism was accepted, and they broke a lot of the stereotypes out there. Yeah, and I think they show the Phoenicians, the brown Phoenicians, as the greatest naval power in at that time. Yeah, so it's I think Asterix has a lot of relevance. You'll enjoy it more if you understand French politics at the time, because in the Mansion of the Gods, one of the guys depicted is Jacques Chirac. The Roman agent there is Jacques Chirac. So who became president of France ultimately. So I've read it in when I was learning Latin. I got the entire set in Latin. It's actually in each language, it's got a different kind of funny to it. Oh, really? Because the British English is funny, the American English one's a really bad copy. It's terrible. It I think that's the one I've read, the British English one. Yeah. The American English one loses all the humor, but I think it's a fantastic reflection on life as well. I mean, it's it shows you that occupation sometimes is shades of grey, which was a very profound thing to say at that point. I mean, we all know today that most occupations are shades of grey. People don't get colonized unless they want to get colonized, in a sense. And genuinely, you learn a lot about other cultures. If you read the Asterix comics, you learn a lot about ancient European cultures and other cultures around, the Mediterranean and stuff like that as well. And it's done in a non-patronizing, non-racist way as well. Which I think the only people in that entire book where a community is shown as real shitheads are the Germans, and I think the Goths.
the gods. and that's because of the war trauma. Yeah, even the Normans are shown as like, simpletons. Like, yeah, they're very violent, but they're also simpletons. And the fun things about it. So if you understand French cuisine, you'll understand this, because the region of France called Normandy was settled by the Normans, right? Yeah. And in Normandy, the thing is apples and cream. That's what Normandy is really famous for. So which is why the Viking chief out there, he wants to put cream and apples on everything. Oh, and they're like, so they're like, तेरी माँ का भोसड़ा, हर चीज में तू apple और cream काय का डालते रहता है, kind of. So there are jokes on that, right? Yeah. And it's how Cacophonics puts the fear of God in, because the Vikings don't know the meaning of fear. And finally they hear Cacophonics is singing, and finally they understand fear. Yeah. And then they say, if you Abbe, read it, yaar. It's genuinely one of the best comic books ever written. Yeah. Thoda culture. Is it too much to ask you go to an opera and read a fucking Asterix comic? Itne uncultured, unsophisticated log ho tum. साले ममता कुलकर्णी का एस देखते हो और भोली भाली लड़की, और तुम सादे एक सोफिस्टिकेटेड ये नहीं पढ़ सकते क्या, चूतिए लोग? ममता कुलकर्णी का ad. Yeah, man, it is. It's a recommendation from me and Abhijit. Please, if you can find it, read the Asterix comic books. You will not regret it. And please ensure you buy the British English version. This one is horrible. The American English version is horrible. It's extremely low quality. The language is lost. And if you understand, so how they keep saying every time he sees the Roman standard, he keeps saying, Obelix keeps saying, the Romans are crazy, the Romans are crazy. And that's because of SPQR. So, it's a play on words. SPQR is Senatus. What the hell? What kind of a comeback is this? So what happens there is SPQR is Senatus Populus Q Romanus, the Senate and the people of Rome. But in modern Roman, it's Sono Questi Pazzi Romani. These Romans are crazy. Oh, it's modern Italian means these Romans are crazy. So it's lots of little puns like that. Ek important question I have by Pramod. Aim, you said that public universities are better than Ivy Leagues in the USA for MS for research stuff. Is it true for remote sensing and GIS? Yes. You know why? Because they actually spend good money. You are kind of insulated from a lot of the shit that happens. True, you don't get into the old boy networks. You really, with these Ivy Leagues, you're paying for old boy networks. There is no science that you're going to be taught at Harvard that you're not going to be taught at, say, University of Albuquerque, New Mexico, and University of New Mexico in Albuquerque. The difference is, big companies that want social randipana, like, Indian industrialists want social validation by donating centers to American universities. You won't get that. But you'll get a lot of government agencies like Sandia National Laboratories investing with you and shit like that. Just do it. It's cheaper, it's better. Can I just find this funny? Abhijit बोल रहा था ये लो वो लो और इधर महेंद्र रगड़ नो चिल पाग लौड़े इधर जहर खाने के पैसे नहीं है। क्या हाल है? कोई बात नहीं, अगर जहर खाने का पैसा नहीं है तो one day Abhijit and I will just do a live stream where we will just tell you about Asterix. ठीक है, फ्री में आके ज्वाइन कर लेना। तो अगर जहर खाने के पैसे नहीं है, Asterix खरीदने के पैसे नहीं है, we will tell you all about Asterix. ठीक है, we will review. Abhijit and I will sit down and we will review our favorite Asterix comic books, top 10. Top 10 no, I like all of them, yeah. Like that's so unfair. It's hard to pick. I do agree that it's hard to pick. Next Thursday मैं इंडिया फ्लाई कर रहे हैं तो मैं नहीं होंगे शो पे, तो तुम लोग को जितने Asterix हम लोग बोर करेंगे तुमको Asterix comics books की कहानी की सुनना चाट लेना Asterix. अच्छा, one question from Mitrandir. He's asking, BC, why is Kushal so white today? Nation wants to know. साला किस एंगल से तेरे को गोरा लग रहा है बहनचोद? वो इतना काला है वो. ये because और उसके देख उसके टी शर्ट पे हल्दी का तड़का, हल्दी और सरसों के तेल का तड़का भी लगा हुआ है बीच में, देख, या सुसु का तड़का है. साले खुद अपने इसमें शर्ट पे सुसु करके सुसु है, नींबू कुत्ते सुसु है, हल्दी का तड़का लगा हुआ है. सुसु येलो डर्टी फेलो.
Any other questions? Are there any other questions? No, question नहीं है, मगर जाने के पहले मुझे एक वीडियो लास्ट, that will be our closing video sharing to commemorate what an auspicious day today. So जाने के पहले का ये गिफ्ट है मेरा सबको. Abhijit is gonna hate it, but I still want to do it. So this is basically Pakistan Cricket Board, Zimbabwe win 1 run by Perth. एहसान तारिक सालों. ये देखने वाला वीडियो है, ये देखो, पैशन देखना बंदे का. बाबर आइजम मम्मली जवान सालो टच करो उधर टच बस, और तुम्हारे से कुछ नहीं होता. जिस सीरिया वो 3 ओवर में 6 रन. शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती सालो? मर जाए अगर गंदे नाले में गिर के साले. फेसबुक पे ट्विटर पे देखो तो इनसे बड़ा कोई हीरो ही नहीं है. खेलने होता नहीं संभव से हर के साले कुत्ते गुस्से में सब सारे मर जाओ, इधर आओ. तुमसे अच्छा तो गली क्रिकेट है. छोड़ो आप दो सबको पॉइंटर, वापस आओ साले कुत्ते. और वापस He's trying so hard not to give दबा के गाली. इतनी कोशिश कर रहा था बेचारा. So good. This was so good. शाबाश बेटे. बहुत अच्छे. That's a good point to end today's video. Thanks as usual guys for joining us. If you'd like to support the show, once again, become a patron. Click on the link in the description down below. Become a patron of the show. And we will be back next week. तब तक गोल्ड जिम के लोगों में अभिजीत की फोटो डाल के अगले मीम रिव्यू पे शेयर करना हमारे साथ. And we will see you next time. तब तक टाटा बाय बाय. और ये बाय बाय देखो, इतने प्यार से बाय बाय कर रहा है 10 मिनट से.